Okay, so now we'll discuss about your conversion of electrical energy MCQ. Okay, what are the questions are there? Almost we are going to discuss around nearly 100 questions, may not be 100, but these are the important questions. You just revise them. Okay, so the yoke of a DC machine is made of. Yoke of a DC machine made of, which is the right answer? Cast steel. Cast iron nahi hai, cast steel is the right answer. Okay, cast steel is the next. The coupling field between electrical and mechanical system of a DC machine is gas. Coupling field यहाँ को रखिए. Which is the coupling field? Now, between the electrical and mechanical system. The electrical mechanical system भितर coupling field के रहला ना तुम्हारा magnetic field is the coupling. Okay, and it may not be electrically connected, but it is magnetically connected. Okay? The real working part of a DC machine is तुम्हारा DC machine रे ये तुम्हारा real working part है, which is the real working part. Generally, armature winding is the real field winding. Gas DC machines are most जैसे pole रो DC machine का commonly we have four pole. Support. Four pole is the next question number one. A four pole DC machine has gas magnetic circuit. Four pole DC machine लो magnetic circuit कितना है? How many magnetic circuits are there? A four pole रो four magnetic circuits are. Sector अगला magnetic circuit वाला north to south, north to south, north to south. These are four magnetic. Okay. Next अगला तुम्हारा कौन हो? सर 8 ही दिले. कितना है? Magnetic circuit अगला तुम्हारा south to north, south north, north south, south north. Okay. So this is the most preferable. Similarly, look at 8 pole लेगा south north 2 3 4 5 6 7 8 8 pole ले 8 4 pole ले only 4 magnet. Okay. Next one question देखो. The greatest eddy current loss occur in dash of the DC. eddy current loss टा कोट अधिक है. आर्मेचर से. वो जगह रे अधिक है उची तुम्हारा eddy current loss है. आर्मेचर रे. आर्मेचर eddy current. Okay. Next तुम्हारा कौन question? The commutator pitch of a simplex lap winding is equal to dash. Commutator pitch तुम्हारा कितना रहेगा? Simplex lap. Commutator pitch माने ये जो commutator segment का साइज है. ओके, तामने एठी जो होता है coil जदी आसला या कि ए जगह आसी बुझला. This is called your commutator pitch is called your commutator pitch of a simplex lap winding is equal to plus or minus 1. Okay. Commutator pitch is equal to plus or minus 1. Plus है गला तुम्हारा का पड़ी. जनरल यार दीर का चोटाला प्रोग्रेसिव आउटला रेट्रोग्रेड. प्रोग्रेसिव तो तुम्हारा नहीं ये पढ़े नहीं. नंबर क्या टर्म रेट्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव आउट है गला तुम्हारा रेट्रोग्रेसिव. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a DC machine, in a DC machine, the number of commutator segment is equal to commutator segment कहाँ से तो समान. Number of conductors twice the number of poles, number of coils, none of them. कहाँ से तो समान. Commutator segment and number of coils से तो समान. In DC machine, number of conductor commutator segment is equal to the number of coils. The nature of armature winding of a DC machine is decided by. किए decide करिए. कोन nature armature winding है. wave winding रहेबो किंबा lap winding रहेबो. ऐसे किए decide करिए. Commutator pitch. Commutator pitch decides it is a wave winding or lap winding. An 8 pole duplex lap winding will have
डैश पैरेलल पाथ से कहला जे लैप वाइंडिंग 8 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ओके यार तुमरो पैरेलल पाथ तुमरो केतना हम कहि तुमरो हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर ताले आमे जानि जे लैप वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ इज इक्वल टू केते हो ओपी है ताले दिस इज फॉर योर सिंप्लेक्स डुप्लेक्स माने एटा तुमरो डबल है ताले a इज इक्वल टू 2p है ताले जदि 2p हे गला ताले दिस इज नथिंग बट 2 into 8 is equal to 16 है so 10d 16 is the right a triplex wave winding will have dash parallel path wave winding रे तुमरो triplex अछि ताले से कोइ जे wave winding रे parallel path हे गला a is equal to b is equal to केते हला 2 हे गला ताले एटा परसेंटेज की triplex दे दे ताले a is equal to 2 into 3 हे गला that is nothing but 6 11 a okay ताले बटन देखो a 6 pole lap on generator has 300 conductor emf induced per conductor is 5 volt then generated voltage is equal to केता हो कहि दियो 6 pole lap on okay has 300 conductor ताले से कहू जे ए जगह तमरो केते अमाउंट रो emf क्रिएट ताले देखो भाई टोटल तमे जानते जे in lap winding parallel path is equal to 4 ताले ए जगह रे बटन पोल अछि 6 टा फिर पैरेलल पाथ है टोटल कंडक्टर केतेटा अछि 300 कंडक्टर ताले पर पैरेलल पाथ कंडक्टर केते पड़ला और पैरेलल पाथ इज इक्वल टू केते हला तमरो ना 50 कंडक्टर ओके 50 कंडक्टर ताले गोटे कंडक्टर केते वोल्टेज दे तमरो ना 5 वोल्ट सप्लाई दे ताले Eg is equal to ना 50 into 5 into 250 250 is the right okay हमें 8 आउ जदी आसे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दबो ताले एटा तमरो केते हे ना 1500 हे जेहेतु तमरो पैरेलल पाथ हे गला पोल 1500 by 6 कर दबो 250 ओके 250 is the right next one for the same rating of a DC machine has dash and AC machine for the same rating a DC machine has dash and AC machine same weight more weight than DC machine less weight than DC machine none of the other DC machine रो कोन हो DC machine और AC machine भीतर डिफरेंस कोन DC machine weight अधिक हो DC machine have the more weight काहे की weight अधिक हबो ना जेहेतु DC machine रे हमें कोन लगु फील्ड कम्यूटेटर मैग्नेट हां फील्ड पोल गुडा का तमरो अधिक है जरा त DC machine सेठी हमें खाली कॉइल यूज करू जे एटी जगह कि फील्ड पोल हमें एटी DC machine यूज ता जो तमरो वेट ता बढी नेक्स्ट क्वेश्चन द फील्ड वाइंडिंग ऑफ a DC machine usually carries dash of the rated current of the machine टोटल केते परसेंटेज रो तमरो रेटेड करंट तमर नउची यार पोल गुडा तमर किसी करंट कंज्यूम करबो ना रेटेड करंट ऑफ द machine ना एटा हे गला तमरो 2 to 5% लाइक दिस क्वेश्चन दे मे नॉट आस्क काहे ना एटा वेरी करे बुक टू बुक तमर एटा तेनु करी एटा को तमे देखो खाली जदी आसी गला 2 to 5 ताले आंसर मार दे ओके a short generator delivers 195 ampere at a terminal potential difference दे दी तमर के दे दी ना 250 दे फर्स्ट टाइम देखिबा शॉर्ट जनरेटर कोन शॉर्ट जनरेटर दे देला माने एटा हला आर्मेचर एटा हे गला हमरो कोन ना शॉर्ट फील्ड और नंबर ऑफ टॉप शॉर्ट फील्ड हे गला दिस इज योर कोन दे जेटा जनरेटर तामने ए जगह हमें टर्मिनल वोल्टेज हमें पाए कल से कोजी देखो ए शॉर्ट जनरेटर डेलीवर 195 एंपियर at a terminal potential difference दे दी तमरो ए जगह तमे 195 एंपियर पाइबो पोटेंशियल डिफरेंस केते पाइबो ना 250 वोल्ट पाइबो ओके नेक्स्ट कोन दे जे द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट फील्ड रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस माने Ra 0.02 ohm and this is your RSS is equal to 50 ohm okay ताले से कोई चीज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरेटेड ईएमएफ ताले केते अमाउंट रे ईएमएफ जनरेट जला ऑलरेडी कर सारियो ए जगह तमर देखो जेहेतु 250 वोल्ट एठी भी रहू ताले एठी भी तमर 250 वोल्ट रही एठी भी तमर 250 वोल्ट रही ओके ताले ए जगह बतन सब जगह जेहेतु 250 वोल्ट रहिला ताले से कोन कहूची देखो सो नेक्स्ट तमर कोन कहूची देखो
ए जगह बर्तन है तुम 250 वोल्ट है ताले ये केते करंट न ना करंट एठी तुम नै जो ISS ताले वी कैन राइट हियर ISS इज इक्वल टू 250 divided by 50 that is nothing but your 5 ओके ताले टोटल ये केते करंट जनरेट करी ताले जनरेट करबा करंट हला IA ताले IA इज इक्वल टू 195 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 200 एम्पियर ओके ताले ये जनरेट कला 200 एम्पियर ताले या जगो किछि ड्रॉप है ताले EG इज इक्वल टू केते जो ना 250 प्लस ऑफ IA RA ताले 250 ऑलरेडी हमर अछि 250 प्लस ऑफ IA RA ताले IA र वैल्यू केते गेला 200 RA र वैल्यू गेला केते 0.02 ओके ताले केते गेला तमरो भाई दियो अरे एटा केते हिजो एटा 4 हिजो 254 है 254 वोल्ट करेक्ट so 254 वोल्ट करेक्ट ओके ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन बोलती in the above question what is the value of copper loss पचाते सेम क्वेश्चन रे से पचाला जे एठी कॉपर लॉस केते ताले कॉपर लॉस तमरो को जगह रहबो वो फर्स्ट वेयर कॉपर लॉस विल बी देयर ना टोटल कॉपर लॉस हमर बाहर साउंड रे और आर्मेचर ताले एठी हम लिखबा कॉपर लॉस CU लॉस आर्मेचर ताले आर्मेचर पे तमरो कोन है जो कॉपर लॉस केते है जो कह दियो स्क्वायर IA स्क्वायर आर IA स्क्वायर आर ताले IA र वैल्यू केते हैला तमरो 200 स्क्वायर इनटू R है गेला 0.02 केते गेला वैल्यू एटा है जो 800 into 0.2 that is nothing but 800 okay similarly copper loss in कोते है जो तमरो copper loss in sound filter copper loss केते है जो ना ISH र स्क्वायर R है ताले ISH रे तमरो केते हैला तमरो 5 हैला ना 5 र स्क्वायर into R रे वैल्यू केते हैला तमरो कह दियो 50 ताले एटा केते है 25 into 50 and this is nothing but your 1250 correct 1250 गला परे तमरो टोटल 50 ताल टोटल ऊपर केते है ना टोटल लॉस इज इक्वल टू होला टोटल एटा आरएससी जो टोटल कॉपर लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉपर लॉस केते गला तमरो ना 800 लॉस ऑफ 1250 इज इक्वल टू 2050 वाट so 2050 वाट इज करेक्ट ओके नेक्स्ट गला तमरो कोन if WC is the constant loss RA is the armature resistance of the disconnector then the load current IL for the maximum efficiency very important एटा ऑप्शन डी होबो very important ऑप्शन डी सर यस सर option D is the right answer okay the root over of WC divided by RA आज भी तुमको कहि चला तमरो कोन ट्रे लॉसेस consist of कोन हेगला तमरो को एक्चुअली मन रखो ट्रे लॉस हेगला तमरो अनवांटेड लॉस बुझला तो सुबुची तो ट्रे लॉसेस हेगला तमरो कोन ना मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉसेस इज कॉल्ड योर ट्रे लॉसेस a 30 kilowatt 300 volt DC shunt generator has armature and field resistance दे दी 30 kilowatt माने तमरो पावर दे देला तमरो 30 kilowatt ओके वोल्टेज तमरो दे देला तमरो 300 volt दे देला आर्मेचर रेजिस्टेंस तमरो दे देला R = 0.05 ohm then field resistance हेगला माने RSS दे देला तमरो केते 100 ohm दे देला ओके व्हाट इज द जनरेटेड EMF ताले एटी पता जे जनरेटेड EMF केता बुझला तो ताले जनरेटेड EMF हम कोन करबा शंट दे दी ताले एटाला आर्मेचर फास्ट तमे डायग्राम ड्रा करियो जे डायग्राम न कलो तमे कंफ्यूजन फील हो जमा क्वेश्चन किछि भी फार्मूला मन रखबो नाही हला फार्मूला मन रखिले किछि फायदा हो डायग्राम फास्ट ड्रा करिवो तापर 1 बाय 1 एटी एटी वोल्टेज हेगला ताले पावर एटी हमें बाहर करि परिबा पावर अछि दे दे वोल्टेज बटन दे देला तमरो बटन एटी करंट बाहर करि परियो ना नै ताले हाउ मच द वैल्यू ऑफ करंट हियर ओ ताले करंट केते हिजो अरे करंट केते हिजो ना करंट हेगला I = P by V हां P by V 30 into 10 to the power 3 divided by 300 ताले this is nothing but your 100 एम्पीयर हिजो ताले एटी बटन देखो ये करंट डिलीवर हेगला हमको 100 एम्पीयर करेक्ट करंट हमको मिल गला केते 100 एम्पीयर करंट मिल गला ताले ISH ये केते करंट नबो ना एठी भी तमरो 300 वोल्ट रहबो यार बर्तन रेजिस्टेंस दे दीची ताले ISH केते हिजो ना ISH जे जो तमरो 300 डिवाइडेड बाय RSH हेगला 100 ताले दिस इज योर 3 एम्पीयर ताले टोटल करंट केते हेगला यार 300 103 हिजो काहे के ना एपुड जाई 3 एपुड जाउची केते 100 ताले टोटल हेगला 103 ताले जनरेटेड EMF एटी केते अछि 300 प्लस ऑफ IR
we can write here Eg is equal to 300 plus IARA ताले जदि आमे IAR भी जदि एठी प्लस कर दो ताले केते हे जाउची देखो बर्तमान ताले एठी रहिला केते रहिला तमर 300 रहि गेला ताले we can write here 300 plus of IA जगह रे केते लिखिया आमे 103 RA जगह रे आमे केते लिखिया 0.05 0.05 ओके ताले दिस इज नथिंग बट योर केते गेला कहि दियो okay this is your 300 plus 5.15 that is nothing but 305.1 305.15 is correct option C is correct okay देखो इन द अबव क्वेश्चन बर्तमान एटा ऑलरेडी हमर बाहर गला 103 बाहर 105 305 बाहर गला इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल पावर डेवलप्ड when generator delivers the full output power ताले सपोज जनरेटर जे ताले full output power दोजी ताले टोटल पावर केते डेवलप्ड हो बुझला तो full output power how is the total power developed कुछ हबो तो where power will develop अरे पावर तो जो डेवलप हबो सेटा कोठी हबो आर्मेचर रे डेवलप हबो आर्मेचर रे डेवलप हबो ताले Eg into Ia हे गला टोटल पावर डेवलप ताले Eg केते गला 305.15 Ia तमर केते गला 103 ताले याकु यासे तो मल्टीप्लाई करो 103 हे गला एठी हे गला 4.5 103 ना 103 ठीक है डिवाइडेड बाय 1000 कर देले किलोवाट आसी जिवो ओके डिवाइडेड बाय जतो तुम 1000 कर दो ताले किलोवाट आसी जिवो ताले एटा हे जिवो तमर केते ना 31.4 एटा चेक कर दियो 31.4 इन दिस फिगर हां तो इन दिस फिगर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी तमर 50 केता ताले एई फिगर रे इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी 50 केता ताले इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी गला कोन ना लोड पाखरे हमर केते बा पहुंचुची केते हमर जनरेट होउची ताले लोड पाखरे हमर पहुंचुची केते ना V * IL एठी हला V * IL आ एठी जनरेट होउची केते Eg * Ia ताले V * IL Eg * Ia सो ऑप्शन बी होबो राइट आंसर क्लियर अरे करेक्ट ना नै यस सर ओ नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कोन देखो ए शंट जनरेटर delivers 195 एंपियर ओके at a terminal voltage of 2 शंट जनरेटर दे देला तमर जेतले देई दबो शंट हो सीरीज हो जहा दोची दो जनरेटर दे देला माने तमे कोन करियो फास्ट डायग्राम ड्रा करो तापर जे कथा फास्ट डायग्राम ड्रा करो एटा हला तमर शंट ओके एटा बेना रहला ओके एटा रहला शंट जनरेटर एटा हम सप्लाई करो ताले से कहूची कोन देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस हेगला तमर केते 0.02 0.02 एटी हेगला फील्ड रेजिस्टेंस केते हेगला तमरो 50 ओम ताले से कहूची देखो आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस इज इक्वल टू आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस इज इक्वल टू दिस मच व्हाट इज द स्ट्रे लॉसेस तमरो का कहबो ना टोटल लॉस जदी तमे बाहर कर दबो सेतु जदी आयरन फ्रिक्शन लॉस बाहर कर दबो ताले तमरो मारि गला कोन ना स्ट्रे लॉसेस तम बाहर करते बुझला ना ताले बर्तन हम एठी कोन करबा ना हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एटा हे जिवो तमरो एतिक तुम जानि गलो 195 एंपियर से डिलीवर करती 250 वोल्ट ओके ताले ए जगह रे हम जानि दबा जे ISS केते ताले ए जगह रे करंट केते हे जिवो ना 250 डिवाइड बाय 50 ताले यू कैन राइट हियर ISS इज इक्वल टू 250 एठी जेते 250 एठी भी रहबो 250 वोल्ट ना यदि एठी 250 वोल्ट रहला एठी करंट केते रहबो ना 250 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 5 ताले ये तमरो केते करंट डिलीवर करिवो ना IA इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ 190 इज इक्वल टू 200 एंपियर इज इक्वल टू केते गला 200 एंपियर ताले ये तमरो डिलीवर कला 200 एंपियर ओके ताले या पाखरे रहला 200 एंपियर करंट से कहूची जे व्हाट आर द स्ट्रे लॉसेस ताले से कहूची स्ट्रे लॉसेस रा वैल्यू तमरो केते ना से कहूची आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस इक्वल टू गला तमरो केते 950 वाट ओके 950 वाट स्ट्रे लॉसेस कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉस ओके ताले तमरो ए जो देइची आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस दिस आयरन एंड फ्रिक्शन losses is also called your stray loss so that so 950 is the right answer okay 22 number A hela 950 is the right answer next question kon kodi देखो in question 22 ए क्वेश्चन ले आउटपुट ऑफ द प्राइम मूवर केते ताल से बर्तन देखो हमें फास्ट गोटा टीसी जनरेटर टा बुझे प्राइम मूवर आउटपुट हम कहला 22 नंबर कहला जे आयरन फ्रिक्शन लॉसेस जहा दीज आर कॉल्ड योर स्ट्रे लॉसेस हम बर्तन देखो ए जगह रे पढि तलबे व्हाट आर द स्ट्रे लॉसेस मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉस हला फ्रिक्शन लॉस मैग्नेटिक लॉस हला एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस so that iron losses and friction losses is called your stray losses so जति के एथि अछि सेति के हबो एटा आउ किछ नै ओके नेक्स्ट ला तमरो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्राइम मूवर
प्राइम मूवर रे बर्तमान हमको केते आउटपुट मिलियो ताले से कहूची जे देखो यदि प्राइम मूवर हमर आउटपुट दरकार अछि ताले टोटल लॉसेस हम बाहर करियो ताले टोटल लॉसेस केते हे गेला हमर ना देखो टोटल लॉस हम केंति बाहर करिवा टोटल लॉस इज इक्वल टू केते हेला तमरो ना कॉपर लॉस ऑफ आयरन लॉस ऑफ कोन हे गेला आयरन लॉस ताले कॉपर लॉस हे गेला तमरो केते ना तुम जानी ना पर्यंत ताले कॉपर लॉस ता तुम फाइंड आउट करि परिबो टोटल कॉपर लॉस ताले टोटल कॉपर लॉस केते हे गेला टोटल कॉपर लॉस केंति बाहर करिवा ना आई एस एस स्क्वायर आर एस एस लॉस ऑफ आई ए स्क्वायर आर ए एटा गेला टोटल कॉपर लॉस ऑफ आयरन लॉस हेला 950 ताले एटा जेतले तुम कैलकुलेट करिवो एठी केते गेला तमरो आईएसएस रे वैल्यू केते अछि अरे 5 अछि ना ताले 5 रो स्क्वायर इनटू 50 लॉस ऑफ एटी आई र वैल्यू गेला केते 200 रे स्क्वायर इनटू 0.02 ओके ताले एटा टोटल हे गेला तमरो एटा हे जो तमरो 1250 एटा ऑलरेडी हमें आगु सॉल्व कर ए जगह सॉल्व एटा 2050 सॉरी नॉट 1250 एटा हला 1200 प्लस 800 2050 प्लस ऑफ 900 ताले टोटल हे गेला तमरो 2950 ताले एति की वाट रो तमरो टोटल लॉस हो ताले से कहू जे हमर प्राइम मूवर आउटपुट केते मिलिबो ना से कहू जे देखो तमरो जनरेटर आउटपुट केते हे गेला ना जनरेटर प्राइम मूवर आउटपुट हे गेला कोन तमरो जनरेटर आउटपुट एई जगह तमरो जनरेटर आउटपुट होची ताले एटा ला प्राइम मूवर आउटपुट ताले एथरे जदि हम किछि लॉसेस ऐड कर दा ताले प्राइम मूवर आउटपुट हम पाइबो ताले से कहू जे देखो प्राइम मूवर आउटपुट इज इक्वल टू प्राइम मूवर आउटपुट इज इक्वल टू केते हेला तमरो ना एठी टोटल पावर आउटपुट केते मिलुची पावर आउटपुट भाई हम कोन करबा ना 250 into 195 कर देबा टोटल पावर आउटपुट प्लस ऑफ टोटल लॉस ताले टोटल लॉस हे गेला हमर केते हेला ना देखो ए जगह हे गेला केते हेला 48 एटा 2950 बनी एटा हे जिवो 3000 काहे ना एठी आ गोटा 50 अछि ना 3000 ताले एटा हे जिवो 48750 लॉस ऑफ 3000 this is nothing but your हे गेला केते हे गेला ना 51.75 किलोवाट नेक्स्ट कोन कहू देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड इन द आर्मेचर रे तमर इलेक्ट्रिकल पावर केते प्रोड्यूस होय एटा को तुम जानि छ ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड तमर केंति बारिवो ना टोटल प्राइम मूवर पावर माइनस ऑफ स्ट्रे लॉसेस ताले इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू प्राइम मूवर पावर माइनस ऑफ स्ट्रे लॉस ओके ताले दिस इज नथिंग बट योर एटा केते गेला तमरो ना 551.75 हे गेला माइनस ऑफ स्ट्रे लॉसेस हे गेला 950 ताले 0.9 एटा जदि माइनस कर दवा एटा आसी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट समथिंग किलो so this is your option what is the mechanical efficiency हमको पता चलो power produced in armature divided by total power चलो एठी हम लिखबा कोन efficiency हे गेला कोन power in armature divided by एठी गेला कोन power produced in armature plus of losses power in armature plus stray losses तर एठी तमर हे गेला पावर प्रोड्यूस्ड इन द आर्मेचर केते गेला ना एटा आर्मेचर पावर प्रोड्यूस 50800 डिवाइडेड बाय पावर इन आर्मेचर हला 50800 लॉस ऑफ 9 एटा कैलकुलेट करले एटा तमर आंसर आसीबो 98 तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी हैविंग द इलेक्ट्रिकल मशीन रो एफिशिएंसी तमर अधिक आबे 98.2 राइट ओके आईडिया आसी गेला आउtre कहि देबी देखो तले ए जगह तमर कोन हला ना स्ट्रे लॉसेस तमर हे गेला कोन स्ट्रे लॉसेस हे गेला तमर कोन ना जोटा आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रे लॉस तो 950 इज द राइट नेक्स्ट पहला तमर प्राइम मूवर रे केते पावर मिलिबो प्राइम मूवर रो जो पावर ता हमको आउटपुट ता माने बाहर करिया पे हेले हमें कोन करिया दरकार ए प्राइम मूवर पावर पे हमें कोन करिया दरकार फर्स्ट हमें देखिबा टोटल हमको केते पावर एठी मिलुची ए जगह हमर पावर दरकार अछि लॉस ऑफ लॉसेस ताले टोटल लॉस ए जगह केते होउची ताले दिस पावर प्लस ऑफ लॉसेस हे गेला प्राइम मूवर पावर माने हला कोन तमरो ना जनरली जो पार्ट हम बर्तन तुम कोन कहू ना ना ए जगह जति पावर तमर एक्चुअली डेवलप हैला ता बाद जे तमर कोन रहबो
लसेस रहइबो बुझला ना नै सेही को लसेस टा रहइबो ना एटा स्ट्रे लसेस स्ट्रे और आयरन लसेस बुझला तो ताले से कोची देखो ना प्राइम मूवर पावर माइनस ऑफ स्ट्रे लसेस हेगला तमर केटा हेगला आर्मेचर पावर हेगला ताले आर्मेचर प्लस ऑफ स्ट्रे लसेस इज इक्वल टू के हेगला तमर प्राइम मूवर पावर हेगला ताले प्राइम मूवर पावर टा हेला सबसे अधिक पावर जोटा कि आउटपुट प्लस ऑफ द लॉस तेणु कर हम कौन कहले आउटपुट बोली प्लस ऑफ द टोटल लॉसेस तेणु कर आउटपुट प्लस ऑफ टोटल लॉस ताले दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट इज योर प्राइम मूवर पावर किंतु पावर प्रोड्यूस इन आर्मेचर आर्मेचर रे केते पावर होची जेतला हम आयरन लॉसेस टा माइनस कर देची देन वी कैन गेट द आर्मेचर पावर ओके दिस इज द पावर डेवलप टोटल केते पावर डेवलप हैला आर्मेचर पाखे केते रहिला हमको आउटपुट रे केते मिले एति गला टोटल सिनारी ताले तमरो टोटल एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी केते आसीबो ना तमे जेतले पावर जेतले प्राइम मूवर पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल पावर तमर जो इलेक्ट्रिकल पावर टा जो जनरेट हैला बुझला किंबा तमे जो पावर टा जेतले सप्लाई कलो ता सहित जेतले लॉसेस हैला एति जेतले आसी पहुंचला फाइनली तमर जोटा जनरेट करिया पे जो पावर दरकार हो दैट इज योर प्राइम मूवर पावर ताले पावर इन आर्मेचर केते हमर आर्मेचर पावर पाखर अछि ताले टोटल ऑफ पावर केते हम सप्लाई दे ताले एटा जेतले कैलकुलेट करबो तमरे एफिशिएंसी ओके एभलिया लेंदी क्वेश्चन प्राय न दे पारंती जदि एटा दियंती तमर जो कैटेगरी नंबर 3 एक्यूरेट बुझला तो 3 नंबर कैटेगरी इजी मीडियम एंड डिफिकल्ट फास्ट तमे कोन करलो मेकानिकल पावर सप्लाई कलो मेकानिकल पावर रु तमे जते बेले आयरन लॉस जते माइनस करिवो आयरन लॉस माइनस जते कर दबो तमर जते बेले हेजिवो कोन हेजिवो ना आर्मेचर पावर बाहर करिवो आर्मेचर पावर रु जते तमे माइनस कर दबो कोन ना कॉपर लॉस जते माइनस कर दिवो कॉपर लॉस जते माइनस कर दिवो जते तमर बाहर करिवो टोटल आउटपुट पावर बुझला तो ए भलिया करी तमे पछे पछे जा आराम रे फास्ट तमे इनपुट देलो जोटा कि अधिका 51.75 टिके लॉस हैला आर्मेचर आसी गला 50800 तापुर जते कॉपर लॉस जते सेतु माइनस कर दबो ताले एई जगह तम पावर पाइ ताले कॉपर लॉस तमर केते ना कॉपर लॉस हेगला तमर केते 2050 ना एई थ्रू 2050 माइनस केता आछि देख 2050 जदि हम माइनस करबा 48750 आछि अरे एई जगह जदि 2050 माइनस करबा केता 48750 आछिबो ताले एई जो 48750 किए ये गेला इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल पावर एबे जानि पाइलो अरे एबे जानि हला ना जानि आगे सर ये रोटे शॉर्टकट फार्मूला अछि तमे कहया का डीसी मोटर को ए डीसी मोटर इज यूज्ड टू डीसी मोटर तमर कोन यूज करा जिवो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी a DC motor is still used in industrial application because on point industrial application this is the provide high speed the carbon brushes are preferred to copper brush sorry carbon question number 3 egala tomar kono carbon brushes are preferred to copper brush kon pai copper brushes अपेक्षा हम carbon brush को काहे कि हमें प्रेफर करिवा ना कॉपर कार्बन ब्रश रे तमर कोन होबो ना तमर कॉपर ब्रश यदि कॉपर टू कॉपर जतले कांटेक्ट आसीबो सेटा ठीक से कांटेक्ट हेई पाइबो सेतले तमर स्पार्क क्रिएट हो टू रिड्यूस द स्पार्क वी हैव टू यूज द कार्बन मटेरियल वाला सॉफ्ट मटेरियल एटा या पर जतले कम्यूटेटर पर जतले रहइबो सेटा आराम से इलेक्ट्रिकल तमर कोन होबो करंट तमर कोन होबो ना इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई टा ट्रांसफर हेई पारि तने जदि स्पार्किंग बेसी नेक्स्ट हेगला तमर कोन 4 हेगला तमर कोन द फील्ड पोल्स ऑन आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन आर लैमिनेटेड टू कोन पे याको लैमिनेशन करा जाए एटा मो बारंबार कहि छी एटा तो केबे भूली बनिया कोन पे लैमिनेशन करा टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस द बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर बैक अपोजिट द अप्लाइड वोल्टेज ऑइडिस माने तबु सपोर्ट करी कारण अपोजिट द अप्लाइड ओके होना नहीं हमर ए जो बैक ईएमएफ हला v माइनस ऑफ ईबी हेगला ना एटा अपोज करियो नेक्स्ट हेगला तमर कोन द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इन ए डीसी मशीन इज मैक्सिमम आट केते बेले एटा मैक्सिमम रहबो बैक ईएमएफ वैल्यू ता केते बेले मैक्सिमम रहबो नो लोड रे ना फुल लोड रे ना हाफ लोड रे ना नो लोड कंडीशन जेतले लोड नाही सेतले तमर अधिक रहबो बैक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हला देखो द मोटर इक्वेशन इज गिवन बाय मोटर इक्वेशन कोन अछि देखो ना एटा ऑलरेडी तुम मु कहितल देखो v माइनस ऑफ eb इज इक्वल टू iar सेकंड हाफ तन करे एटा हला v जदी तुम देई एटा eb जाई कि सेपटा आड है v इज इक्वल टू eb प्लस iar
DC shunt motor on no load condition, the quantity of EB into IA represent EB into IA no load condition रे EB into IA टा कहाँ को represent करेगा ना it represent EB into IA back EMF into armature current, total friction, windage and core loss. Okay, this is your EB into IA. Next question तमर कौन कहला, the quantity V into IA represent ताले यही figure रे तमर V into IA V हेगला एटा हला V हेगला तमर supply voltage केते बोलतो एटा हेगला तमर IA ताले V into IA ता तमर कहाँ को represent करिवो, it will represent your all type of loss. V into IA हेगला तमर all losses, EB back EMF into IA जदि हम करिवा that is your friction, windage and core loss. Okay, जेहेतु आउटपुट नहीं एटा ला इक्वेशन रे IA हम मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस प्लस ऑफ कॉपर, दिस इज योर कॉपर लॉस, दिस इज योर आयरन, तन करे एटा हेगला आयरन लॉस एटा हेगला तमर कॉपर, ताले एटा हेगला तमर टोटल लॉस इनटू IA हेगला. ओके, नेक्स्ट हेला तमर कोन, द टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन ए डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन बैक EMF इज इक्वल टू दैट, तो कहला बैक मैक्सिमम देजी मैक्सिमम पावर मैक्सिमम हम कहि ऑलरेडी मैक्सिमम पई तमर कोन हबो कहि दियो, तुम कहितल ना जतले मैक्सिमम कंडीशन आसेला EB इज इक्वल टू V बाय 2 हाफ है इक्वल नहीं ना हाफ होगा. ओके, अरे कहै नथला देखिबो एटा नोट देखिबो लिखा है EB इक्वल टू व्हेन स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इंक्रीजेस इट्स आर्मेचर करंट कोन, तले स्पीड तमर बढ़िबो तमर कोन हबो आर्मेचर करंट टा कोन हिबो ना से कहूची देखो तमरो एटी डिक्रीज हो हां देखि दियो IA इज इक्वल टू V माइनस ऑफ EB बाय R, ए जो EB हे गला तमरो कोन ना EB इज प्रोपोर्शनल टू योर N, तले ए जगह रे EB टा हम हटाई कि एठी N लिखि परिबा डिवाइड बाय R है. से कहला जे स्पीड ऑफ डीसी मोटर इंक्रीजेस यदि एटा जदि तमर इंक्रीज कला तले ए IA टा तमरो कोन हबो, अरे एटा जतले बढ़िला टोटल ऊपर वैल्यू टा एटा कोन कमी जी एटा जतले कमी गला तले यार वैल्यू कोन आइयो कमी जी. 11 नंबर P, the amount of a back EMF of a shunt motor is increases तो केते बेले तमर इंक्रीज करियो, the load is increased, field is weakened, the field is strengthened, ए भलिया क्वेश्चन तमर आसीबार मोर चांस. ओके, तो 12 नंबर हे जिवो तमरो 12 नंबर हे जिवो तमरो सी the field is strengthened, तल से बोल देखो amount of a back EMF of a shunt motor increases केते बेले तमरो बैक EMF टा इंक्रीज करिवो जेते बेले तमरो फील्ड रो स्ट्रेंथ बढ़िवो. बैक EMF इज नथिंग बट EB इज इक्वल टू P5Zn by 60A होना नहीं, लोड इज इंक्रीज लोड से तो किसी रिलेशन नहीं, फील्ड इज वीकेंड फील्ड जदी वीकेंड है जो EB इटा भी वीकेंड है जो फील्ड जदी स्ट्रेंथन होबो तले एटा बढ़िवो. द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज डैश, स्पीड ऑफ द डीसी मोटर का सहित से कोची कोन होबो तमरो ना स्पीड ऑफ द डीसी मोटर दे दिछ ना स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू V माइनस ऑफ IAR डिवाइडेड बाय 5, ताले एटा हेगला तम स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल, ताले फ्लक्स पर पोल जितरा तमरो कमिबो स्पीड तमरो बढ़ी जिवो एटा जले बढ़िबो स्पीड तमरो कमिबो. तेनु करी शंट मोटर रे ए जो फ्लक्स टा तमरो सब बेले कांस्टेंट होय सेति लागि शंट मोटर को काम करछि कांस्टेंट स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, the torque developed by a DC motor is directly proportional to torque developed by the DC motor is directly proportional to torque developed, okay, flux per pole into armature current. एटा ऑलरेडी तुमको कुआ है कि P is proportional to phi into IA होना नहीं सीरीज जतले हे जिवो phi is proportional सीरीज रे phi is proportional to IA तन करी T is proportional to IA square है. The shaft torque in a DC motor is less than the armature torque TA because gas in the motor full losses हबारु shaft torque ता तमरो कमी जाई full losses, that is your iron and friction losses होना नहीं. अरे फ्रिक्शन लॉस एठी तो कॉपर लॉस आसीबो ना टॉर्क रिड्यूस होजी माने फ्रिक्शन आसीजु तंग एटा जो फ्रिक्शन लॉस. आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर इज इंक्रीज तमर को जो आर्मेचर रिएक्शन डीसी मोटर इंक्रीज होबो when the armature current increases, तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होबो आर्मेचर रिएक्शन. नेक्स्ट तमर कोन कहू देखो now with respect to the direction of rotation of the interpole on a DC motor most of the same polarity are the main poles. से कहू देखो same polarity जतल हबो that is your behind, okay, this is nothing but your behind.
गोटे हला बिहाइंड आउट हला अहेड इंटरपोल जोटा जो हमें प्लेस करबा का भीतर मेन पोल भीतर जो इंटरपोल छोटा प्लेस करबा सेटा कोठ रहबो सेटा ओके so behind them eta मन रखो behind them next question kon देखो in a DC motor the process are shifted from the mechanical neutral position in a direction opposite to the rotator एटा तमरो कोन पई करा जाय प्रोसेस पोजीशन चेंज करा जाय आर्मेचर रिएक्शन टाको कम करिया पे बुझला तो यार आंसर हेला तमरो टू रिड्यूस द स्पार्किंग एटा को ऑपोजिट रे हमें काहे कि तमरो ये करबा ना एटा स्पार्किंग टाको रिड्यूस करिया पई एटा को हम कोन करबा ना द प्रोसेस आर शिफ्टेड फ्रॉम इट्स मैकेनिकल न्यूट्रल प्लेन टू ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द रोटेशन मान जो डायरेक्शन में रोटेशन करा होतो तार ऑपोजिट डायरेक्शन का हम कोन करबा ना ब्रश रो पोजीशन टाको चेंज करबा टू रिड्यूस द स्पार्किंग सेम डायरेक्शन हेले स्पार्किंग अधिक in a very large DC motor with severe heavy duty armature reaction effects the corrected by armature reaction का तमरे केमिति तमरे corrected कराओ by using the compensatory winding in addition to the interpole what is the meaning of a compensatory winding तमरे कोन हेगला ना जेति कि तमरे एक्चुअली पोल रहा कथा सेति रहइबो ता बाद हमें कोन करबा ना किछि एक्स्ट्रा वाइंडिंग दबा ता दिस इज कॉल्ड योर compensatory winding माने एटा जदि तमरे पोल हेगला एटा जदि तमरे पोल हेगला एइथु एतक एक्स्ट्रा हमें दबा this is called your compensatory winding okay compensatory interpole रहिबो ता सेटा compensatory winding भी रहिबो the speed of a dash motor is practically constant तमु कोइ कि एटा को मोटर रो स्पीड ता practical constant रहबो this is your VVI very important sound motor मन रखो एटा ओके कंट्रोल ऊपर क्वेश्चन ता देखो जी देखो by putting the controller resistance in series with the armature of a DC motor we obtain the dash speed ताला हमें एठी को स्पीड हमें पाइबा एठी ना below the normal speed जेतले रेजिस्टेंस हम लगे दबा जति स्पीड हेबा कथा कम जी नेक्स्ट ऑफ द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग ताले केमिति तमे स्पीड रो डीसी मोटर रो स्पीड को कंट्रोल करबो यार फ्लक्स चेंज करबो आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस चेंज करबो अप्लाइड वोल्टेज ऑल ऑफ द एबो भीतर मोटर स्टार्टर्स आर एसेंशियल फॉर मोटर स्टार्टर रे कोन रे दबर दरकार तो अवॉइड द एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट जो एक्सेसिव रोजी ताको कमेया पई हमरा मोटर रो आवश्यकता पड़ी the only disadvantage of the field control method okay for controlling the speed of a DC motor is that it gives speed lower than the normal speed is wasteful needs a large rheostat adversely affects the commutation eta मन रखो okay the rheostatic speed control method is very eta कोन अब rheostatic speed control method हला it is very unsuitable for your rapidly changing load जेतले load जेतले संगे संगे जतले चेंज हो जाउची तले रियोस्टैटिक मेथड ता से जगह रे बेसी सुटेबल नहीं रियोस्टैटिक इज नथिंग बट योर वेरिएबल रेजिस्टेंस सेटल करियो बन्ना सेतले हठात जतले लोड चेंज होची ओके नेक्स्ट हला ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर तमरो कोथरे काम करे को एसी ना डीसी ना एसी डीसी एसी तुमके एटा बारंबार कहै ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज वर्किंग ऑन एसी नॉट इन ऑन डीसी एसी ओनली इज द राइट नेक्स्ट the primary and the secondary of a transformer are dash coupled केमिति ए दीटा को कपलिंग है magnetically coupled not electrically that is magnetically coupled okay next question the transformer is an efficient device because transformer को काहे के हम efficient कहूची because it is a static device rotational losses से नाही ना किसी friction losses होबन तेनु को एटा ला efficiency आर अधिक voltage per turn of the primary of a transformer is dash voltage of the turn of the secondary से कहूची जे एटा voltage per turn primary and secondary तमरो कोन हबो ना सेम हबो एथरे जति के एथर मध्ये सेति the iron core is used to dash the transformer कोन है जे बेटा to provide the tight coupling से कहूची iron core जगह जदि हमें वुड लगै दबा ताले मैग्नेटिकली जो कपलिंग ता होची एटा तमरो ठीक से हबो सेति लागि तमरो आयरन कोर ही यूज करा नेक्स्ट है तमरो कोन द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एटा कहा पर तमरो डिपेंड करिवो ना इट डिपेंड्स अपॉन योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एटा तमरो मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस्ड it is inversely proportional to supply frequency actually यार formula आएगा phi max is equal to V1 divided by 4.44 N1 into F ताले एठी F सहित एठी कोन हला ना inversely proportional when the primary of a transformer is connected to a DC supply जेतेबेले primary ता जदि हम DC supply रे लगेबा ताले सेतेबेले कोन हो ना primary में burn out
प्राइमरी में बर्न आउट किंबा तुम ये किसी भी कौन हम मैं ये हम कौन सेकेंडरी आम किसी भी आउटपुट पाइबा इट विल आक्ट एज जो प्राइमरी आम जो कौन करवा ना डीसी सप्लाई देदेबा दिस कंडक्टर्स विल आक्ट एज ए रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस भाई काम करेंगे जब तुम करेन्ट जो बढ़े बढ़ी चलो ये मे बर्न आउट जब डीसी सप्लाई जो कम दब तो या किसी इफेक्ट पड़े बर्न आउट हेनी है तो इट डिपेंड्स अपन द टाइप ऑफ वोल्टेज केते अमाउंट ऑफ वोल्टेज हम दो दिस इज नॉट दैट मच गुड ओके हम आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन व्हिच दैट से कहले आइडियल ट्रांसफार्मर तुम क्या कहबो ना आइडियल ट्रांसफार्मर हैज नो लॉसेस and leakage reactor okay no losses and no number a low voltage no number तमर कौन देची देखो a low voltage outdoor lighting system uses a transformer that steps 120 volt to 24 volt तामाने तमर अछि 120 volt अछि सप्लाई रे V1 अछि 120 volt तमर आउटपुट दरकार अछि 24 volt okay ताले से कोई for the safety the equivalent resistance of the low voltage lamp is 9.6 ohm. What is the current in the secondary coil? Assume that the transformer is ideal and there is no loss. ताले से कोई बर्तमान तुमरो करंट तुमरे केते हबो से हमको पचारछि बुझला तो ताले से कोइ देखो करंट हमर बाहर करिया पे हेला हम कोन करबा ना I2 दरकार अछि ताले I2 is nothing but your V2 divided by R ताले V2 हेगला केते तुमरो 24 R हेगला तुमरो केते 9.6 ताले that is nothing but your 2.5 ohm. So 2.5 ampere is the right. Okay. In the above question, what is the current in the primary coil? So यदि कोई बर्तमान प्राइमरी कॉइल रे तमरे केते करंट हबो ताले प्राइमरी कॉइल गुडे करंट पे हम कोन करबा फार्मूला कोन पकेबा V1 I1 V2 I2 ताले V हमर I1 दरकार अछि ताले I1 V2 V2 हेगला तमरे केते 24 I2 हेगला केते 2.5 डिवाइड बाय V1 केते हेगला तमरो 120 ताले एतला 24 50 120 5 रे काटि दियो एटा हेगला 1/2 is nothing but 0.5. So 0.5 ampere is the right. In question number 2, how much the power is used? ताले से कहूँ जे कितने पावर आमे यूटिलाइज करछि ताले पावर इज नथिंग बट योर हेगला P इज इक्वल टू केते हेगला ना V1 I1 cos phi V1 I1 cos phi 1 ताले बर्तमान पावर हेगला तमरे एठी पावर फैक्टर एठी किछि देछि कि फॉर द लैंप एठी देछि माने खाली एटा रेजिस्टिव लोड पे पावर फैक्टर हेगला 1 ताले cos phi is equal to 1 due to pure resistance lamp is called your resistive okay तेनु को रेटी केते हेगला तमरो ना V हेगला तमरो केते 120 into एटा केते हेगला तमरो 0.5 into 1 that is nothing but 60 watt correct 11 number next तमरो क्वेश्चन कोन दे देखो a transformer has a efficiency of 80% and works on the 100 volt 4 kilowatt supply. If the secondary voltage is 250 volt, find the primary current. ताले suppose primary current हमको केते अछि बाहर करियार अछि बुझला तो ताले how to find out the primary current okay ताले एठी बर्तमान तमे अज्यूम करो जे पावर फैक्टर इज यूनिट ताले cos phi एठी तमे अज्यूम करो 1 ओके cos phi जदि हम अज्यूम करे 1 ताले हम जानछि जे पावर इज इक्वल टू केते हला ना V1 I1 cos phi 1 ताले बर्तमान हमर दरकार अछि कोन दरकार अछि प्राइमरी करंट I1 ताले पावर हेगला तमरे केते ना 4 किलोवाट 4 into 10 to the power 3 watt डिवाइडेड बाय V हेगला तमरे केते हेगला ना 240 हेगला इनटू हेगला 1 हेगला ताले 4 into सॉरी एटा हेगला वोल्टेज एटाला सेकेंडरी वोल्टेज दे देछि ना प्राइमरी वोल्टेज केते हेगला 100 हेगला 100 हेगला प्राइमरी 100 हेगला प्राइमरी ताले एठी तमरा केते हे ना 40 एम्पीयर अरे बुझि पालो ना नहीं आवर इक्वेशन पकड़े तमरा এই क्वेश्चन এই 12 এই जो क्वेश्चन हम कले 12 नंबर एठी हम प्राइमरी करंट बाहर कर देली हम तो सेकेंडरी करंट पचार ताले सेकेंडरी करंट पे हम कोन फार्मूला पकेबा कहि दियो सेकेंडरी करंट पे हमर पचार छी ना ताले एठी हम तम हे जो कोन ना V2 I2 cos phi 2 is equal to efficiency का देतला 80% देतला ताले 80% of the power ताले 80% ताने 80 divided by 100 into power input power हेगला तमर केते ना 4 into 10 to the power ताले एठी तमे I2 हेगला तमर केते हेगला 0.8 into 4 into 10 to the power 3 divided by V2 ର वैल्यू हेगला तमर केते ना 240 that is nothing but एठी केते हेगला तमर 48 हला एठी हेगला तमर केते 13.5
Next question. 2000 divided by 200 volt 20 kVA ideal transformer has 66 turn in the second. The number of a primary turn from the second. তাহলে এই জায়গার তোমার k এর ভ্যালু কত হয়ে গেল? তাহলে how much the value of a k? আর k এর ভ্যালু তোমার কত হলো? k তোমরা কাকে কইছো? v2 by transformation ratio v2 by v1 না হনা নাই v1 i1 by i2 and 2 by 200 divided by কত হয়ে গেল তোমার 2000 হয়ে গেল তাহলে this is nothing but your 1 by 10 হয়ে গেল তাহলে এতে তোমার সেকেন্ডারি টার্ম কত আছে না আমি জানি যে this is your n2 by n1 is equal to হয়ে গেল 1 by 10 সেকেন্ডারি টার্ম যদি দিচ্ছি তোমরা 60 তার মানে n2 দিয়ে দিচ্ছি তোমরা কত দিয়ে দিচ্ছি 66 দিয়ে দিচ্ছি তাহলে n1 কত তাহলে অতএব n1 is equal to হয়ে গেল 56 into 10 তাহলে that is nothing but your 6 এইটা যদি তোমার ডিফিকাল্ট হইতান্তা যদি এটি দেইতান্তা 6.6 দেইতান্তা তাহলে এটা ডিফিকাল্ট হইতান্তা এটা 66 দিয়ে দিচ্ছি না তুমি ন দেখি भी आंसर করি পারিব কাହିଁକି না দেখো এটি এটা হলা প্রাইমারি রে 2000 আছে সেকেন্ডারি রে 200 আছে তাহলে কেতে গুণা ইয়ার কমিলা 10 গুণা কমিলা তাহলে সেকেন্ডারি রে আছে 660 10 গুণা বঢ়াই দব 660 ହେଇଯିବ नेक्स्ट क्वेश्चन इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द फुल लोड सेकेंडरी करंट इन द अबव क्वेश्चन ए क्वेश्चन रे फुल लोड सेकेंडरी करंट हमको पता छै केता ताले सेकेंडरी करंट हे गला हमर केते नाउ कैन राइट योर सेकेंडरी करंट हला आउटपुट ये i2 हे गला तमर केते ना 20 kVA माने हला किलो वोल्ट एम्पियर ये डिवाइडेड बाय हमर वोल्टेज हे गला केते v2 की 200 दिस इज नथिंग बट योर एटा हे जो तमर केते हे जो this will come your around 100 ampere okay 100 ampere is correct full load primary current पचार ताले जतले primary current तमरे जदि हे गला ताले i1 पचारला ताले i1 रो वैल्यू कते हे गला similarly 20 into 10 to the power 3 divided by 2000 ताले कते हे ना 10 ampere 10 गुणा ना अरे एटा यार 10 गुणा एटा जदि 100 हेला एटा 10 होबो नेक्स्ट क्वेश्चन the no load ratio of a 50 hertz single phase transformer is 60,000 divided by 250. The maximum flux per pole is hela तमरे what is the number of a primary torque तो कोची primary torque ए जगह हमरा केते दरकार है माने n रा वैल्यू पचा केते है ताले आमे जानथि जे emf इक्वेशन केते गेला तमरो ना e is equal to 4.44 5 max fn ताले एठी n हमर दरकार अछि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न पचाची माने एटा को n1 कर दबा एटा को e1 कर दबा ताले e1 हे गला तमर केते गेला 60000 हे गला हो ना नहीं कोन कहू हो ना नहीं कोन तो कुह एटलीस्ट आगे सर 6000 डिवाइडेड बाय 4.44 रहला 5 मैक्सिमम हे गला 0.06 हे गला फ्रीक्वेंसी हे गला 50 so this is nothing but your turn will come there 450 turns okay in the above question the number of turns in the secondary ए जगह किसी असुविधा नहीं secondary turn 50 ताले एक्चुअली एटा केते हला 60000 by 250 ना ताले ए जगह हम लिख देबा डायरेक्टली 6000 divided by 250 6000 divided by 250 तमर दे देजी 6000 by 250 दे देजी ना केस दे देजी तमरो ताले एटा हला 6000 एटा हला केते हला 250 ताले इज इक्वल टू तमरो केते हेजिवो ना प्राइमरी टर्न n1 divided by secondary टर्न n2 हम 50 खाली सेकेंडरी टर्न टा केते ताले n2 रे वैल्यू 50 ताले n2 रे वैल्यू हे गला केते हला ना 6000 divided by 250 into 250 into 450 divided by okay ताले यार वैल्यू केता आसी जीवो यार वैल्यू आसी जीवो तमरो केता आसी जीवो इसले केता नॉट लगभग 20 नेक्स्ट a 20 ton iron core inductor is connected to a 100 volt okay 50 hertz supply the maximum flux density हमर दे दे कते 1 weber per meter square the cross sectional area of the core 50 केता ताले ए जगह रे cross sectional area of the core 50 केता ताले cross sectional area हमें केमति बाहर करबा ना हमें जानि छी जे 19 नंबर एटा हला 8 नंबर 19 नंबर सॉल्यूशन कोन कोन पचासी आ बीटा मैक्सिमम तमर दे देछि केते बीटा इज इक्वल टू 5 by a ताले तुमको जदी 5 जणा पडियो ताले ए जानि परिबो ताले बर्तन हमर काम वाला 5 जदी हमके जानि देबा ताले हमें ए पाई परिबा ताले 5 हमें केमति जानिबा ना 5 जानिया पई हला हम कोन करबा देखो 5 हमको जानियार अछि ना
ताले हम एठी कोन करबा ना ईएमएफ इक्वेशन पुट कर ताले ईएमएफ इक्वेशन इज इक्वल टू केतला 4.44 5 मार्क्स f into n ताले एठी देखो 20 टर्न अछि ताले e रे वैल्यू गेला तमरो केते 5 मार्क्स इज इक्वल टू केते गेला ना 100 डिवाइडेड बाय 4.44 into f रे वैल्यू गेला 50 टर्न हे गेला तमरो 20 ताले दिस इज नथिंग बट योर phi will come your 0.0225 ताले एड जदी बाहर गेला तमरो एरिया दरकार ताले एरिया केते हे गेला तमरो phi डिवाइडेड बाय b ताले phi डिवाइडेड बाय b हेगा तमरो एरिया ताले b केते अछि 1 अछि ताले 0.0225 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0.0225 मीटर स्क्वायर ओके ओ बराबर मीटर स्क्वायर अछि ना सो दिस इज आल्सो योर मीटर अरे बुझियला ना yes ଟିକେ ଗୋଟେ डाउट ଟେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ क्वेश्चन ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତମେ କଣ କରିବ ଏଇଟାକୁ 4.44 ନବ ଏଇଟାକୁ सीधा 5 ନେଇ ଯା ବୁଝିଲା ତ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା या पे मैं कहि दउछि दीटा सुन फास्ट काटी दियो कटि गला ताले रहि गला केते 5 गुणे 10 रहि गला अरे 5 गुणे 10 ना नहीं एटा तमे 5 नहीं जा 5 नहीं गेले तमरे केते आसला 50 आसी गला ना नहीं अरे एटा 10 एटा जदि मैं 5 नहीं दिए 50 आसी गला ताले 1 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.02 ना नहीं ताले तुमको एतक कई कहूना बाहर करिया पे खाली 0.02 पे गोटी ऑप्शन अछि सेटा ही आंसर होबो बुझ पालो तो एटा दिमाग लगाइबो एटा तुम जतला एप्टीट्यूड भर्ती आगु करिवो सेतल जानि परबो सेत लागे बर्तन देखो दीटा सुन कटि गला 5 गुणे 10 एटा को बर्तन मु 4.44 न नहीं 5 नहीं गेली ताले 1/50 गेला 1/50 गेला माने 0.02 मोर एतिकी पर्यंत आसले भी सॉल्व हो जाउती क्वेश्चन ना असुविधा कोन ओके चलो हां नेक्स्ट क्वेश्चन हेगला तमरो कोन कैलकुलेट द कोर एरिया रिक्वायर्ड फॉर ए 1600 kVA कोर एरिया रिक्वायर्ड बता ओके एटा तमर दे देछि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे देछि 50% सप्लाई दे देछि सिंगल फेज टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर आज इन द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एटी फ्लक्स डेंसिटी देतला एटी इंड्यूस वोल्टेज पर टर्न दे देछि तमर केते ना 30 वोल्ट एटी 50 जे तमर कोर एरिया केते 20 नंबर ताले कोर एरिया तम बाहर करिया पई हेले फास्ट तम कोन करो ना फाई मैक्सिमम बाहर करो जदि फाई मैक्सिमम बाहर कर दउछो ताले फाई मैक्सिमम बाय बी मैक्सिमम इज इक्वल टू तमर हेगला एरिया बुझला तो ताले आमे कोन करिया बर्तमान ना फाई मैक्सिमम बाहर करिया ताले फाई मैक्सिमम पई आमे कोन जानती फार्मूला E इज इक्वल टू 4.44 फाई मार्क्स F into n तमर कोन दे दी देखो इंड्यूस्ड वोल्ट पर टॉर्क ताहले E by n तुमको दे दी 30 ताहले E by n is equal to 4.44 5 marks into f ना ताहले एटा कते दे दी तुम 30 दे दी ताहले वी कैन राइट हियर 30 is equal to 4.44 5 marks into f ताहले अतएव ए जगह तुम 5 marks पाई परिबो 5 marks र वैल्यू केते गेला तमरो ना कैलकुलेशन करबा को कैलकुलेशन कला पर एटा आसी 0.135 आसी गेला 5 marks आसीला पर तमरो कोन अछि बीटा अछि ताले एटा बर्तन एरिया तमर दरकार ताले एरिया इज इक्वल टू 5 marks डिवाइडेड बाय बीटा फ्लक्स डेंसिटी दिस इज योर फ्लक्स डेंसिटी बीटा ताले इज इक्वल टू केते गेला 0.135 डिवाइडेड बाय बीटा हेगला 1.2 हे गेला ताले एटा केते हिजो ना लगभग एटा आसी जेबो तमरो 1125 एक्चुअली आसीबो एटा केते आसीबो ना 0.1125 मीटर स्क्वायर मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर एटा आसीबो तमरो 0.1125 मीटर स्क्वायर आसीबो याको जेतला सेंटीमीटर करबा 10 टू द पावर 4 हे जे ओके एटा निजे चेक करबा नेक्स्ट हेगला हमर कोन ना 3 फेज इंडक्शन मोटर कोन बर्तन देखो ये कौन दे दी द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रोड्यूसेस डैश मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट कौन कहले देखो द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो an induction motor is preferred to a DC motor कौन पे तमरे इंडक्शन मोटर का प्रेफर करा गला ना इट इज सिंपल एंड द रॉक कंडक्शन ओके नेक्स्ट है तमरा कोन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज दैट 3 फेज इंडक्शन मोटर ता हेला तमरा कोन एसेंशियली कांस्टेंट स्पीड मोटर काहे कि ना तमरा एटा जते स्क्विरल केज मोटर इंडक्शन स्क्विरल केज मोटर जब लगेबो एटा कांस्टेंट स्पीड ही ये सप्लाई करे दैट स्पीड तमरा सिंपल थी परियो और एकला कोन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 3 फेज सप्लाई टू द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज increased then the synchronous speed तमरा कोन हो पता ना कहि जे देखो कौन दे देखो ये तो फ्रीक्वेंसी जदि तमरो इंक्रीज कराला सिंक्रोनस स्पीड तमरो कोन हो कहि देखो
ताले आमे जानि जे इक्वेशन हे गला f इज इक्वल टू केते गला p into ns divided by 120 ताले से कहै जे f is proportional to हे गला तमरो ns हे गला ताले से कहै देखो if the frequency of three phase supply to the stator of the three phase induction is motor is increased ताले frequency यदि increase हबो ताले synchronous speed कोन हबो ना is also increase ओके 4 नंबर p नेक्स्ट 5 नंबर कोन दे देखो the synchronous speed of a three phase induction motor हे गला तमरो केते हे गला motor having 20 pole and connected to a 50 horse source then it is तमरो ns पता ns is equal to केते गला तमरो pn by 120 ना 60 120 f by p ताले 120 into f हे गला तमरो 50 by 2 pole हे गला तमरो केते ना 20 pole ताले एटा केते हे गला तमरो गोटे गोटे काटी दियो एटा हला 60 60 50 300 rpm 300 rpm okay so option d is the right answer the relation among the synchronous speed and the rotor speed okay n तमर दे देची स्लिप दे देची तो एटा भी तम मु कहि स्पीड गुडा यार रिलेशन ता टिके तमरो मन रखिबो हला एटा गला n is equal to गला 1 minus s into n so option b is your right answer okay 6 number b is बुझना तो नेक्स्ट कोन दे देखो when the rotor of a three phase induction motor is blocked ताले स्लिप तार कोन है रोटर जेतला तमर सेटा ब्लॉक है माने रोटर स्पीड 0 हो गेला ताले स्लिप से जगह कोन है ना स्लिप ता तमरो मैक्सिमम है ताले मैक्सिमम स्लिप है केते है ना 1 काहे कि ना तमे जानते जे स्लिप इज इक्वल टू केते हला ns माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय ns होना ने ताले ए ब्लॉक है माने यार वैल्यू जो 0 है ताले एटा जदी 0 हो गेला ताले केते हला तमरो ns बाय ns व्हिच इज नथिंग बट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे देखो the rotor frequency is dash when the motor is standstill motor जेतले standstill अछि rotor frequency पचा ताल तमे जानि छे जे rotor frequency हे गला तमर केते गला s f dash ताले f dash is equal to s into f हे गला ताले जेतले standstill माने there is no rotation ताले s is equal to केते गला 1 हे गला for standstill ओके ताले जेतले एटा जदी 1 हे गला ताल तमर frequency केते हे जो तमर f dash is equal to f है ताले h is equal to 50 hertz है ताले जदी तमे 50 hertz सप्लाई जदी एठी देइछ फ्रीक्वेंसी ताले एठी मध्ये तमे पाइबो रोटर फ्रीक्वेंसी मध्ये पाइबो a 4 pole induction motor has the synchronous speed of 1500 rpm then frequency केते एटा निहाती ए बेले गोटे क्वेश्चन पकेबो f p n भीतर रिलेशन ओके p is equal to देदला 4 n देदला तमरो 1500 50 जी तमरो फ्रीक्वेंसी केते f is equal to pn by 120 ताले pn by 120 हे गला 4 into 1500 divided by 120 okay that is nothing but your 50 hertz माना ने तो का स्थित 1500 60 12 50 hertz is the right next the rotor winding of a three phase wound rotor माने हेगा तमरो कोटा wound rotor कोटा slip ring rotor induction motor is generally dash connected ताले generally एटा तमरो connected करा जाय ना it is connected in star connected बुझला तो 10 नंबर ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो रोटर का कनेक्शन हवा सेटा तमरो स्टार कनेक्टेड जनरली दिस इज नथिंग बट योर स्टार ओके नेक्स्ट ला तमरो कोन ओन टाइप रोटर मोटर इज मेनली यूज्ड इन एप्लीकेशन होया हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड तम कहि छै एटा स्क्विरल के जो अपेक्षा स्लिपिंग रो कोन सब एडवांटेज दैट इज योर हाई स्टार्टिंग ए 4 pole 50 hertz induction motor operates at 5% speed ताले frequency of the EMF produced in the rotor frequency तमर 50 ताले 5% स्लिप दे देछि ताले हम जानि कि frequency f dash is equal to s into f होना नहीं ताले 5% दे देछि माने s is equal to 5% ताले 5 by 100 is nothing but 0.05 ताले this is nothing but 0.05 into हे गला केते गला 50 हे गला ताले this is nothing but your 5 divided by 100 into केते गला 50 हे गला ताले एटा एटा कटि गला 2 रहला ताले this is nothing but 2.5 watt अछि 1 नंबर C is right next question the reactance of the rotor circuit in three phase induction motor is maximum reactance का तमरो maximum केते बेले हबो ना reactance का तमरो maximum हबो at the starting मन रख एटा reactance of the rotor circuit of the three phase induction motor is maximum at starting point the rotor current in a three phase induction motor is dash the slip सहित rotor current ता तमरो कोन हबो ऐसे कोछि देखो slip सहित एटा ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना slip जेतरा तमरो बढ़िबो rotor रो तमरो current रे बढ़िबो ताले rotor current is directly proportional to the slip when slip increases rotor current is also increases next
if the slip of a 3-phase induction motor increases ताले पावर फैक्टर कोन हबो ना स्लीप सहित पावर फैक्टर रो रिलेशन हेला तमरो इट इज डिक्रीज जेतले स्लीप इंक्रीज करियो तेतले पावर फैक्टर डिक्रीज करियो स्लीप is inversely proportional to the power factor pf okay स्लीप जेतले इंक्रीज करियो पावर फैक्टर कोन हबो ना डिक्रीज करियो is decrease the starting torque by 3-phase induction motor is dash the supply voltage starting torque ta supply voltage सहित तमरो कोन करिवो ना कोन करिवो रिलेशन कोन directly proportional to the square of the supply directly proportional to the square of the supply starting torque is equal to directly proportional to the square of the supply ओडा डायरेक्ट मन रखो सीधा आसीबो टिक मारी के आसीबो किछि तम भाबिया दरकार एटा फार्मूला टा हां फार्मूला रे तमरो एटा आथिला ना डायरेक्टली तम एटा को मन रखिबो आंसर करिया the maximum torque of a 3-phase induction motor under running condition रे तमरो कोन हो एटाला स्टार्टिंग कंडीशन एटाला तमरो रनिंग कंडीशन बेले तमरो हे जो एटा inversely proportional to the rotor reactance at the standstill okay the maximum torque of a 3-phase induction motor under running condition is inversely proportional to the rotor reactance at the standstill okay next question हेगला तमरो कोन next question हेगला if the ns and n are the speed of the rotating field and the rotor respectively the ratio of the rotor input to the rotor output केते हिबो ratio of the rotor input to the rotor output तमरो पचाची यार रेशियो टा तमरो केते हिबो यार रेशियो हे जो तमरो ना ns by n the ratio of rotor input to the rotor output rotor input हेगला ns rotor output हेगला n ताले दिस इज नथिंग बट योर ns by n है ओके rotor input ip rotor input divided by rotor output is equal to ns divided by okay for a higher efficiency 3-phase induction motor the slip would be ताले सब छ हाई एफिशिएंसी पई तमर स्लीप रे वैल्यू कोन हो तमे जानि जे एफिशिएंसी हेगला तमर 1 माइनस ऑफ एस ताले एफिशिएंसी जतले बढ़िबो स्लीप वैल्यू कोन हो कमिया दरकार ना अरे हो ना नहीं स्लीप वैल्यू कमिया दरकार कमिया as small as possible okay 19 number as small as if a 3-phase induction motor is running at a slip of s then approximately the efficiency of the motor का पचाची करते efficiency तुमको ऑलरेडी कहा कि 1 minus of s is equal to approximately this is your approximate efficiency 1 minus of s हेगला तुमरो स्लीप s is equal to slip okay next हम देखिबा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रो okay ताले फर्स्ट क्वेश्चन अछि देखो a single phase induction motor employs dash rotor single phase induction motor रे हमें को टाइप रो रोटर हमें लगे which type of rotor is employed in the single phase induction motor okay this is your squirrel case type ए जगह रे तमरो wind type लागि परिबो नाही काहे कि तमे कोई जगह रे भी देखिना जे सिंगल फेज रे तमे wind type लगे कि स्लिप रिंग लगे कि पला कोठी पे एटा ला squirrel case type okay for the same rating the size of the single phase induction motor is above dash that of the 3-phase induction motor माने सब जे सेम रेटिंग रे तमरो केते ए जगह तमरो वैल्यू केता हबो 3 टाइम्स हबो ना 1.5 टाइम्स हबो ना 0.33 टाइम्स हबो फॉर द टाइम्स हबो एटा तमरो हे जो केता हे जबो ना 1.5 टाइम्स दिस इज योर 1.5 फॉर द सेम रेटिंग पई 1.5 साइज ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर माने यार टिके बड़ साइज रहै सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टिके बड़ साइज रहबो 3 फेज काहे कि ना 3 फेज रे तमरो सेल्फ स्टार्टिंग हेले गोटिए वाइंडिंग रे तमरा काम हो जाय किंतु या पय तमर दरकार दीटा वाइंडिंग करिया दरकार तमको यार टिके बॉडी टिके कंस्ट्रक्शन रहै 1.5 for the same rating the power factor of the single phase induction motor is dash of the 3-phase induction motor एठी जगह पताला पावर फैक्टर ओके ए जगह पताला तमरा कोन पताला साइज पताला एबे बर्तन पताची पावर फैक्टर केता आ पावर फैक्टर हेबो लेस देन द 3-phase induction काहे कि पावर फैक्टर लेस हबो ठीक है ना ए जगह एक्चुअल तमर कोन कि कोटा कैपेसिटर यूज कैपेसिटर काम वाला पावर फैक्टर इंक्रीज करे तने को यार पावर फैक्टर ता कम रहबो यार पावर फैक्टर लेस देन टू द 4 नंबर हेगला तमर कोन फॉर ए सेम रेटिंग द एफिशिएंसी पचाला एफिशिएंसी तमर कोन बा सेम रेटिंग रे एफिशिएंसी कोन हबो ना जनरली एफिशिएंसी हे जो लेस देन टू द 3-phase इंडक्शन मोटर काई 3-phase इंडक्शन मोटर रे ऑटो स्टार्टिंग टॉर्क माने स्टार्टिंग तमर जो ये रहउची साइक्रोनस स्पीड तमर जो स्पीड रहउची एटा ऑटोमेटिक किंतु ए जगह नोटे कैपेसिटर यूज करूची किबा तमरा को स्प्लिट सेल्स करू ओके तेनु करी 4 नंबर हेगला लेस देन हेगला
efficiency हेगला less than. Next question. Most of the single phase induction motors are dash machine. Generally तमर single phase induction गोटे motor गुडा एटा generally 4 poles. Okay. 4 pole हेगला तमर कोन हेजिवो ना जेतला p = 4 हेजिवो तमर n केते हेजिवो 120 into f divided by p. ए जकर p तमर आसीबो लगभग 1500 आ. Okay. सेतला कि तमर एटा 4 pole generally रहता. The main winding and the starting winding of a single phase induction motor are connected in dash across the supply. Main winding और starting winding टा हमें केमिति supply से connect करते हैं parallel way से connect. The starting winding of a single phase induction motor has dash that of running winding. ताले suppose starting winding रो running winding सहित कौन तमर रहइबो बुझला त more pole रहइबो ना less pole रहइबो ना कौन रहइबो ना same number of pole. starting winding रे जेतिक pole running winding रे मध्य सेतिक pole. नेक्स्ट हेगला तमर कोन 50 हर्ट्ज से 4 पोल हेगला तमके एबे बाहर करके देखै छी n = केटा हे जिवो ना 1500 आरपीएम. एटा जनरल क्वेश्चन ओजेई पई एटा डायरेक्टली 1500 आरपीएम तमे भाबी तो नहीं किछि नहीं लिखियो जेला ये फार्मूला जे आप न पड़ला सीधा से 120/p फार्मूला और 120 into f हेगला 50 e हेगला तमर केटा 4 और दिस इज नथिंग बट 1500. चल से कोइ देखो 50 हर्ट्ज सप्लाई इंडक्शन में स्लिप दे दी 5%. द स्पीड ऑफ द मोटर विल बी केटा यदि 5% यदि तमर स्लिप रही गला ताले मोटर रा स्पीड तमर 50 के ताले यार आंसर जनरल तमर रहइबो 1425 प्राय तमर रहइबो. एटा कैलकुलेशन करो कैलकुलेशन कले भी तमर आसी दिबो 1425 आसी ना केमति आसी देखो ना हमें जानि छी जे स्लिप = केटा हेगला स्लिप = केटा हेगला ns minus of n by ns ताले 4 पोल 50 हर्ट्ज ताले एटा केटा हेगला तमर एटा हला 5% ना ताले एटा जिवो 1500 minus of n divided by 1500 into 100 कर दियो. जोड़ेशन काटी दियो रहि गला केते रहला 1500 minus n is equal to 75. ताले तमरे n दरकार अछि ताले 1500 minus of 75 is nothing but your 1425 is correct. B is correct. Okay. The purpose of starting winding in a single phase induction motor is कौन पई तमर starting winding टा single phase induction motor रे लागो to produce the rotating flux in conjunction with the main winding. Rotating flux produce करिया पई हम एटा लागू. In the resistance split phase induction motor, okay, as shown in figure, एटा हम देखला next page पे. As shown in figure, okay, the main winding has dash. ताले से कोइ जे एई जगह तमर main winding रे तमर कोन. Okay, the resistance split phase induction motor, the main winding has low resistance and high inductance. Low resistance and high inductance. Next हेला तमर कोन at starting is in the starting winding shown in figure. एटा तमर is माने एटा हेला कोन एटा ला starting एटा ला is ताले ए जगह से कोइ जे is ର वैल्यू तो तमर कोन रहइबो ना जनरली तमर is ର वैल्यू रहइबो is nearly in phase 90 degree. This is for your starting winding. Okay, এটা 90 डिग्री लीड की लैग करियो त 90 डिग्री लीड लैग कते बेले करबो ना जते बेले तमरो इंडक्टेंस जते बेले होबो एठी कोटे रेजिस्टेंस लागि छी ना रेजिस्टेंस जते बेले लागिला एटा कोटे इन फेज क्वांटिटी हिजो जो जगह रे इंडक्टेंस अधिक आइबो आईएम ता तमरो लीड की लैग बुझलो तो जनरली लीड होय नि लैग हो बुझ पाइलो एटा तमरो लैग तो हाई इंडक्टेंस से तो अछि ना मेन वाइंडिंग रे ना अछि हाई इंडक्टेंस आईएम तम का क्वेश्चन पछे आईएस माने स्टार्टिंग वाइंडिंग भाई कोन this is your V, this is your IS, this is your IS. Nearly, this is your IS. Okay, तमर एई भला केस है एटा हला तमरो एटा एक्चुअली लीडिंग होबनी एटा लैग करियो माने पछु माने एटा IS तो नियरली योर 90. ओके एटा हला IM एटा हला तमर IS IS आ V सहित रहबो इन फेज काहे के एटा गोटा रेजिस्टेंस भी लागे एटा ला रेजिस्टिव टाइप रो काम करियो रेजिस्टिव रे तुम जानचो करंट आ वोल्टेज इन फेज रहबो एटा जेतु तमर अछि लैगिंग अछि एटा रहबो 90 डिग्री तेनु पर एटी क्रिएट हबो कोन तमरो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हबो बुझ पाइलो अरे एटी त आईएम पता था ताले लैग 90 डिग्री लैग बाय भी 90 डिग्री ऑप्शन ए हेटा ओके लीड हबोनी केबे लैग करी नेक्स्ट क्वेश्चन in the capacitor start induction motor shown in the figure the angle alpha between the IM and IS ए जगह बटन दे दी एट दे दी तमर कैपेसिटर दे दी एटा ला IM एटा गला तमर कोन हेगला IS हेगला यांको भीतर तमर एंगल 85 केता कैपेसिटर काम कोन करिवो इंक्रीज करेबो ये एक्चुअली एटा हला V
एटा थिला तमरो आईएस थिला को जगह रे जेतेबेले तमे एटा कंसीडर करथला एई जगह तमरो कोन थिला एटा थिला आईएस थिला किंतु एटा बर्तमान एठी जेतेबेले आईएस हो एटा हेगला नियरली आईएम हेगला एटा हेला एटा को आईएम ना नहीं एटा को आईएम एटा तमे आईएम ओके एटा लैग कला ए जो लैगिंग ता करबो एटा हम केते डिग्री एंगल हम जानि बुझला ना नहीं एटा जदी हमरो एटा हम जानि ना एक्चुअली केते डिग्री एंगल तेणु एई जगह लैग अछि बोली तमे कहितांता आईएम जदी हे जे लैग अछि जोटा सेटा हेतांता आंसर दीटा को जगह लीड अछि एठी अछि लीड अछि एठी अछि लीड अछि लीड तो केबे हम लैग करबो तेणु एइटा हेतांता आंसर किंतु एक्चुअली एंगल ता हमको जाना नै जे केते डिग्री एंगल रे लैग ओके आईएस ता बर्तमान कोन हबो जेतु कैपेसिटर लगेलो एटु के एग्जिस्ट करबो ताले एइटा हे जे तमरा आईएस मॉडिफाइड आईएस ताले एइटा बर्तमान जे मॉडिफाइड आईएस हे जो यांको भीतर ओटा एंगल दिस एंगल इज एक्जेक्टली हमर कते जो ना अबाउट 75 डिग्री ताले दिस एंगल इज एक्जेक्टली 75 डिग्री ओके तो 13 नंबर हे गला तमरो अबाउट 75 डी इज करेक्ट चलो तो टोटल 90 डिग्री हबनी 75 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ IS in capacitor start motor shown in figure is dash the current IS ताले सिकोजी देखो IS रे वैल्यू आ IM रे वैल्यू भीतर रिलेशन तुमको पता ताले एठी कोन हबो ना IS आ IM भीतर रिलेशन तुमर कोन हेजिवो ना IS is less than to that of IS कौन पाई लेस देन हबो एठी गोटा कैपेसिटर कोन करियो चार्ज स्टोरिंग करियो ताने करंट स्टोर करियो जनरली एई IS रे वैल्यू ता कमी जिवो IM रे वैल्यू ता अधिक तेनु करी IS is less than to the IM okay the capacitor C used in the capacitor start motor is always dash capacitor माने को टाइप रे हम कैपेसिटर लगेबा तमे ऑलरेडी घरे जो लगाउछो फैन रे लगाउछो को टाइप रे कैपेसिटर लगाउछो ना दीज आर जनरली योर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ओके इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज द so up to this we have discussed so many questions okay I think so this is your 15 question तमर 3 phase रो थिला केतरा क्वेश्चन 3 phase थिला कोडले टोटल केता हैला 35 ता पर तमर थिला so we have discussed 105 questions total हैला DC generator हैला तमर 20 टा क्वेश्चन okay this is your DC generator रो 20 टा क्वेश्चन तमर हैला नेक्स्ट हैला तमर हैला 20 टा क्वेश्चन हैला DC मोटर रो तमर हैला तमर 19 टा क्वेश्चन 20 प्लस ऑफ सॉरी 25 टा क्वेश्चन हैला ट्रांसफार्मर हैला तमर 20 टा ऑलमोस्ट 20 टा डिफरेंट इंडक्शन मोटर हैला तमर 20 टा ओके अब तो कोड काम एटा हैला तमर आउ दिस नीचे टिके ओके if you like the classes don't forget to subscribe our channel and to share with your students thank you all like the